Today we are going to discuss about medical history taking at bedside. I am Dr. Khalil, working as a consultant physician, BMC Hospital, Quetta. This is a memorable picture of our unit. This is my beloved supervisor and great teacher, Professor Dr. Abdul Baki Durrani. What are the learning objectives of today's session? At the end of this presentation, you will be able to take a proper medical history from a patient at the bedside. You will be able to formulate your own history-taking format at the bedside. Medicine is learned at the bedside, not in the classroom. This is Hippocrates' art. The medical art consists of three factors: the disease, the patient, and the physician. Physician is the servant of the art. The patient must cooperate with the physician in combating the disease. Hippocratic art consists of disease, patient, and physician. The physician has to declare the past of the patient, diagnose the present, and foretell the future. To declare the past, diagnose the present, and foretell the future, you need a proper medical history from your patient. What is the medical history? Do you have any idea? What is the medical history? Medical history is not just a piece of information. Medical history, it is a process of systematic information collection, analysis, and interpretation. It is a process of systematic information collection. First, you have to collect information from your patient. Then you have to analyze and interpret it in order to generate a comprehensive picture of a patient health, diagnosis, and differential diagnosis. Is it clear? History is a process of systematic information collection, analysis, interpretation in order to generate a comprehensive picture of patient health, diagnosis, or differential diagnosis. A medical history is the first step in making a diagnosis. First step in making a diagnosis is the medical history. And especially in the 17th century, most physicians rely on the history only. No one seen the patient at the bedside. No one has done the investigation. Study shows 70 to 90% of cases will be diagnosed on the basis of clinical history only. 70 to 90%. Your whole plan of physical examination, investigation, and management depend upon your history.
A comprehensive history may give you more clue to the diagnosis than the physical examination on the bedside. Only we need a comprehensive history, a systematic information collection, analysis and interpretation. It can give you more clue to the diagnosis than the physical examination. Maybe on physical examination, you will not get any abnormalities, but the history can tell you. It is more important than the physical examination. Problem solving method, those are the experienced physicians. They use this method, problem solving method. Suppose jaundice is a problem. Patient presented with the jaundice. And in your mind, a lot of differential diagnoses come. The jaundice may be due to the malaria, may be due to the enteric fever, may be due to the hepatitis, may be due to the liver abscess, or may be due to the drug induced. Before you go through the complete history, only you see the problem and you think for the differential diagnosis. This method is called problem solving method. Experienced physician obtained the history and a problem solving method that is based on testing a hypothesis. It is necessary to have knowledge of each symptom and the symptoms of each disease. Let us start initiating consultation. First, you have to greet the patient and seek permission. Shake the hands warmly and introduce yourself to the patient. Hello, I'm Dr. Khalil. With your permission, I want to ask some question regarding to your illness, regarding to your problem. Be polite, gentle, and empathic to create an atmosphere of trust and confidence. Do not sit on the bed. For this picture, I acknowledge Dr. Daulat and our colleague's friend, Naseem. Do not sit on the bed. Do not stand over the patient while taking history. Find a chair, sit on it. This is the ideal sitting for taking a history from your patient. After introduction and seeking permission, the second component of medical history taking, you have to note particulars of the patient, means introductory data. Particular of the patient introductory data should be recorded using following headings. First, you have to note name of your patient, age of your patient, sex, religion, marital status, occupation, residency, or address. These are few components you have to note under the introductory data.
Name. What is the importance of name in taking medical history? Name, this show identity of the patient. It is very important to know the patient by name to establish a rapport. For example, Mr. Norman, what is your problem? You have to call the patient by name. In case of similar, you have to record father or husband name as well, or record the NIC number. Or you can check the address or date of birth. To avoid mixing among them, there are similar names. You have to ask the father name, NIC number, or date of birth. What is the importance of age? Certain diseases are more common to a particular age group. For example, a 15-year-old kid presented with cervical lymphadenopathy most likely he is suffering from viral or bacterial throat infection. Similarly, a 60-year-old patient presented with cervical lymphadenopathy most likely is suffering from leukemia or malignancy. Drugs interaction, drug dosage, and drugs contraindication are different in different age group. This is very important. Drug interaction, drug dosage, and drugs contraindication are different in different age group. Certain diseases in certain age group, for example, I have given here old age and young age. In the old age, if the patient presented with the chest pain in the old age, most probably, first of all, you are going to rule out the MI. But in the younger kids, most probably you are going to rule out the pneumonia, acute bronchitis, ischemic heart disease, hypertension, osteoarthritis, stroke, benign hypertrophy of the prostate, and carcinoma are disease mostly of old age. While infectious diseases such as rheumatic fever, measles, polio, chickenpox, and hepatitis mostly found in early age individuals. What is the importance of sex? Sex, this shows the identity of the gender. Certain diseases are gender specific. This is one example, female and male. Endocrine, such as disease of the thyroid, iron deficiency anemia, rheumatoid arthritis, SLE, irritable bowel syndrome, and cystitis are predominantly common in female. While ischemic heart disease, MI, stroke, carcinoma of the stomach, lungs, kidneys are common in male. Hemophilia affects male only, the females are carrier. So on the basis of sex, you are going to differentiate the certain diseases, possibilities. What is the importance of religion? Carcinoma of penis is rarely seen in Jews and Muslims because of their religious custom of circumcision in infancy.
And marital status. Ask for the marital status of the individual, whether married or single, separated, divorced, or a widow. In case of a married female, focus on this sentence. In case of a married female, especially inquire about pregnancy and lactation to avoid drug interaction and adverse effect. If your patient is married and patient is female, you have to ask about pregnancy and lactation to avoid the drug adverse effect and drugs interaction. Occupation. It shows the socio-economic and educational status of the patient and possible risk to their health. Certain diseases have shown a predilection towards certain occupation. For example, coal miners are prone to get pneumoconiosis due to inhalation of dust. Similarly, dentists and surgeons are prone for hepatitis B and C infection due to their occupation. Bus drivers or bus conductor or teachers, they are more prone to get varicose veins due to long standing period. And tuberculosis more common in low socioeconomic status. Is it clear? This is a study is done in US coal miner. If you increase the year of mining tenure, prevalence of pneumoconiosis will be increases. This is the study I have taken from this journal. Another study from this journal, I only noted the abstract. Hepatitis B virus surgeon and surgery. Surgeon continue to be at high risk for occupationally acquired hepatitis B virus infection. This is another study. Prolonged standing at work is being proposed to be an important risk factor for varicose veins. Teachers are prone to have varicose veins due to prolonged standing period. What is the importance of residence or address? It shows the identity of the patient for further communication. Certain diseases have got geographical distribution, such as thyroid disorder, are common in hilly area due to deficient iodine in the soil. Dengue is common in Lahore and Karachi, while malaria in Sibbi and Quetta district of Balochistan. On the basis of residency address, you are going to think about certain diseases. Then, after introductory data, then we will come for the presenting complaint. Presenting complaint, these are problems that have brought the patient to see a doctor. Is the presenting complaint. Presenting complaint, just like FIR, first information report. What are the components of the presenting complaint and how we should note it?
Presenting complaint, it should be patient's own word. What does it mean? Patient own word. Do you have any idea? Patient own word means there should be no leading question. There should be no leading question. The second component, it must be written in objective form. What does it mean, objective? For example, patient is complaining indigestion. Indigestion is a subjective. What do you mean by indigestion? Diarrhea or constipation or abdominal pain? It must be written in objective, not subjective. There should be no medical terminology. No medical terminology means there should be no diagnosis. For example, what is your problem? I am typhoid. Typhoid is a diagnosis. Instead to write typhoid, you have to write fever. What is your problem? My problem is diabetes mellitus. Diabetes mellitus is diagnosis. You have to write polyuria polydipsia. Polyuria polydipsia are not medical terminology, are not diagnosis. There must be duration. Without specific duration, this presenting complaint is incomplete. And duration must be written in the chronological order, from longest to the shortest duration. What was the first component? Patient own word. जिस तरह हमने डिस्कस किया था, there should be no leading question. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट आस्क, does not the pen move to the angle of the jaw? You have to ask, does the pen ever move? Let the patient with a free choice of answer. If the patient says yes, you should ask where does it move? Is it clear? आप लीडिंग क्वेश्चन यही होती है जो क्वेश्चनर है उसकी डिजायर इसमें शामिल है. जिस तरह यहाँ does not the pen move to the angle of the jaw? This question contains the desire of the questioner, angle of jaw. Instead to ask, does not the pen move to the angle of the jaw? You should ask, does the pen ever move? Yes. Where? Is it clear? There should be no leading question. This must be written in objective, not in subjective part. For example, I am feeling sick. What is your problem? मैं बीमार हूँ. I am feeling sick. वो तो मरीज को पता है. It must be an objective form. Does the patient mean vomiting or fever? क्या आपको बुखार है, उल्टियाँ आ रही है, क्या है? It need clarification. Such as the patient say, I have alternating bowel habit. Do you mean diarrhea or constipation? I have gut problem. I am not feeling well. My urine is not clear. My head is hot. My heart is sinking. All are subjective.
you have to convert them into objective. Why? The importance is that history डॉक्टर दौलत ने लिए, लेकिन इनका फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर दाऊद करेगा और इनका इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर आसमा करेगी. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द, इट मस्ट बी रिटन इन ऑब्जेक्टिव पार्ट, नॉट इन द सब्जेक्टिव पार्ट. अगर डॉक्टर दौलत ने हिस्ट्री सब्जेक्टिव पार्ट में ली है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, तो क्या डॉक्टर दाऊद को समझ में आएगा? नहीं आएगा. अगर डॉक्टर दौलत ने लिखा है कि माय पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ इंडाइजेशन, क्या डॉक्टर दाऊद के समझ में आएगा? नहीं आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय इंडाइजेशन? एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है. तो इट मस्ट बी रिटन इन ऑब्जेक्टिव, नॉट इन सब्जेक्टिव. नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी सिंपली मीन नो diagnosis. Diagnosis should not be written as a presenting complaint. For example, the patient says, I have angina, I have diabetes mellitus, I have hepatitis, I have typhoid. All these are medical diagnoses, so are not accepted as a presenting complaint. You have to write chest pain on exertion for angina. Is it clear? Because chest pain is symptom. It carries a lot of differential diagnoses, including angina. Jaundice for hepatitis. Jaundice is a symptom, while hepatitis is a diagnosis. Jaundice carries a lot of differential diagnoses, including hepatitis. The symptom that carries a broad differential diagnosis, you can write them under the presenting complaint, but you can't write the diagnosis. Similarly, polyuria polydipsia for diabetes mellitus. Polyuria polydipsia may be due to diabetes mellitus, may be due to hypercalcemia, may be due to diuretics, drugs. There are a lot of differential diagnoses of polyuria polydipsia. Fever for typhoid. Typhoid is diagnosis, fever is symptom. Fever may be due to typhoid, may be due to malaria. Duration. Presenting complaint without a specific duration is incomplete. Duration must be written in the chronological order. Ask the patient, how long have you been suffering from each of these symptoms? This is very important. From each of these symptoms, maybe patient presented with the abdominal pain, fever, and headache. You have to specify the duration of each symptom, each of these complaints, recorded in chronological order of their appearance from longest to shortest duration. For example, fever 20 days, jaundice 10 days, pain in right hypochondrium 7 days. This is one example of chronological order from longest to the shortest.
Longest is 20 days, shortest is 7 days. If you have noticed an abnormality, सपोज मरीज ने नहीं बताया लेकिन आप हिस्ट्री ले रहे हैं, दौरान हिस्ट्री आपने कोई एबनॉर्मलिटी नोट किया. इफ यू नोटिस एन एबनॉर्मलिटी इन एरिथेमेटस scaly rash on the cheeks, yellow discoloration of the eyes, or goiter, or any scar or rashes not mentioned by the patient, you have to ask about it directly. Maybe patient having scaly erythematous rash, maybe odematous poppy eyes. During history, you have to ask about it directly, although patient did not mention. Is it clear? It is worth remembering that if your presenting complaint is not correct, a rational diagnosis will never be possible. This is very important sentence. You are going to wrong way. This is wrong way. अगर आपका presenting complaint correct नहीं है तो आपका diagnosis तक आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं. आप जा रहे हैं तुर्बत, आपने पकड़ा है डेरे बुकटी का रास्ता, क्या तुर्बत पहुंच जाओगे? नेवर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो ही मरीज ने बता दिया, यू हैव टू पुट स्क्रीनिंग क्वेश्चन. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई हैव फीवर, मुझे बुखार है. इसके अलावा और कुछ है? यू हैव टू आस्क फॉर स्क्रीनिंग. तो मेन फोकस जो है आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे होना चाहिए. अगर आपका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट करेक्ट है, सही है, आप अपनी मंजिल पे, अपनी डायग्नोसिस तक, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो. अगर आपका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही गलत है, आप कभी अपने डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकते हो. दिस इज द वन एग्जांपल. यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे. आफ्टर introduction, seeking permission, and presenting complaint, now we are going to discuss history of presenting complaint or history of present illness. आप मेरे साथ हैं? It is the detailed description of the presenting complaint or illness. Detailed description of the presenting complaint. तो इसका मतलब है कि आपका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट अगर सही है तो फिर आप उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन लेके एक पार्टिकुलर डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं. अगर आपका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही गलत है तो जितना भी आप इस पे मेहनत करोगे, आप कभी नहीं पहुंच सकोगे अपने डायग्नोसिस पे. Started from the beginning of the initial symptom, extend to the time of appointment with a doctor. First component of history of presenting illness, history of presenting complaint, is the elaboration of symptom or complaint in a chronological order. From longest to shortest duration,
Listen to the patient attentively for 1.5 minutes before interrupting with relevant question to fill the gap. This is very important. और एग्जाम में इस सेंटेंस का बड़ा वैल्यू है. जो ही मरीज ने अपना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बता दिया, डोंट रश टू हिम. क्या है तकलीफ, क्या है, मुझे बुखार, और क्या है, और क्या है. You are going to rush. It is not acceptable in case of medical history taking. You have to listen for 1.5 minutes before interrupting. Elaboration of symptom. Elaboration तो आपको पता है, जिस तरह पेन को एलाबोरेट किया जाता है, शार्पनेस ऑफ ब्रेथ को एलाबोरेट किया जाता है, उनकी ऑनसेट है, सीवियरिटी है, ड्यूरेशन है. एलाबोरेशन ऑफ द सिम्टम इंक्लूड मूड ऑफ ऑनसेट, whether it was sudden or gradual, progression of disease with evolution of symptom, intermittent है या constant है, aggravating or relieving factor है, timing and severity of the complaint. This elaboration, this is the one example I have given. The elaboration will be varies, will be different for every symptom. जिस तरह पेन को एलाबोरेट कर लेते हैं हम, सोक्रेट का नेमोनिक यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह शार्पनेस ऑफ ब्रेथ को एलाबोरेट किया जाता है, जिस तरह अनकॉन्शियसनेस को एलाबोरेट किया जाता है. सही. यू हैव टू गो थ्रू द एलाबोरेशन ऑफ ईच सिम्टम. यू हैव टू आस्क फॉर मूड ऑफ ऑनसेट, सडन और ग्रेजुअल, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, इंटरमिटेंट और कांस्टेंट, aggravating or relieving factor, timing and severity of the complaint. Then first component of the presenting complaint, elaboration. Second component is the association. What does it mean? Association. To get an accurate diagnosis, always ask for associated symptom of system that include the presenting complaint. मिसाल के तौर पर पेशेंट आया है एब्डोमिनल पेन के साथ, तो उनकी जो एसोसिएटेड सिम्टम हम पूछने जा रहे हैं, वॉमिटिंग इज एसोसिएटेड विद द abdomen, constipation, diarrhea. Association for the associated symptom of system that include the presenting complaint. Abdominal pain है और पेशेंट कंप्लेन भी कर रहा है हेडेक का, तो आप कभी नहीं लिख सकते हैं कि एब्डोमिनल पेन इज एसोसिएटेड विद हेडेक. Headache is from another system. Abdominal pain is from another system. Try to focus on that particular system that include your presenting complaint is called association. ये clear हो गया? Here's for example, presenting complaint is breathlessness. अब breathlessness हमें पता है कि either it is cardiovascular system, either respiratory suppose. तो cardiovascular system में क्या पूछते हैं? Associated symptoms should be include chest pain, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, palpitation, to rule out or rule in the possibility of cardiovascular disorder. Whereas breathlessness associated with cough, sputum, wheezes,
हेमोप्टाइसिस सजेस्ट अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। देखो ये एसोसिएटेड सिम्टम भी चेंज हो गए। आपने कार्डियोवास्कुलर को मद्देनज़र रखते हुए आपने आर्थोपेनिया, पीएनडी, पाल्पिटेशन, पीडलोडीमा, यही चीज़ें आपने पूछे थे। अब आपने रेस्पिरेटरी को मद्देनज़र रखते हुए आपने कफ, स्प्यूटम, वीजेस, हेमोप्टाइसिस पूछ रहे हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ प्रॉपर डायग्नोसिस, क्योंकि पेशेंट कभी एक सिम्टम से डायग्नोसिस नहीं होती है उनकी। वन सिम्टम जस्ट लाइक अ वन वर्ड। व्हाट डू यू मीन ड्रेसिंग? ड्रेसिंग का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े बदल लेना, कुछ कहते हैं कि पट्टी करना, कुछ कहते हैं बाल बनाना, कुछ कहते हैं कि किसी सलाद का नाम है। तो ड्रेसिंग का मुख्तलिफ मानी हो गए। ड्रेसिंग का मतलब उसी वक्त समझ में आएगा जब आप उन्हें सेंटेंस में डालोगे। एक सेंटेंस के लिए हमें 2-3 वर्ड की ज़रूरत होती है, तब जाके वो एक सेंटेंस बनती है। इसी तरह हमें डायग्नोसिस के लिए हम एसोसिएशन के मरून मिन्नत हैं। अगर एसोसिएशन नहीं हो गया, सपोज माई पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद ब्रीथलेसनेस, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? क्या हो सकता है? अगर आपने कहा कि माई पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद ब्रीथलेसनेस एंड एसोसिएटेड विद चेस्ट पेन, आर्थोपेनिया एंड पीएनडी, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? कार्डियोवास्कुलर। क्लियर हो गया? My patient presented with shortness of breath with cough, sputum, hemoptysis. What is your diagnosis? Respiratory. So association is very, very important. So we are going to discuss the relevant systemic inquiry. अब ये relevant systemic inquiry क्या चीज़ है? Systemic inquiry should be relevant to the presenting complaint. It is a not voice. You are going to ask the question from head to toe. It must be relevant to the presenting complaint. Here's, for example, patient presented with breathlessness. एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसकी रेलेवेंट सिस्टमिक इंक्वायरी क्या हो सकती है? हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, स्वेलिंग इन द एंकल और फीट, पाल्पिटेशन, आई ब्लड प्रेशर, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट इन द सिस्टमिक इंक्वायरी। समझ में आ गया? Systemic inquiry must be relevant to the presenting complaint. In the relevant systemic inquiry, if you are going to ask in case of breathlessness, you are going to ask for chest pain, history of high blood pressure, swelling of feet. It is means you are thinking for cardiovascular diseases. If you are going to ask for fever, weight loss, night sweat, you are thinking for the respiratory diseases, tuberculosis, whatever. Is it clear? Yes. Systemic inquiry must be relevant. The irrelevant systemic inquiry create a bad impression for your profession. Suppose a young girl came to your OPD with the history of toothache, and you are going to do systemic inquiry, and you are going to ask, do you have any lump in your breast? What will be reaction of that lady? This will be the reaction. What is this? Is it clear to you? This picture, this image? हाँ? नजर नहीं आ रहा है?
This is mirage, mirage. This is mirage. What do you mean mirage? ये शराब है. This is not pool of water. This is area of desert. This is optical illusion. Reflection of light in the outer air. सहरा में जा रहे हैं, आपको लगता है कि दूर वहाँ पानी है, वहाँ पहुँचते हुए पानी नहीं है. दिस इज मिराज, 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 शराब है. तो irrelevant systemic inquiry just like mirage. You are putting yourself in the desert and opening a stream of water is not possible. By doing irrelevant systemic inquiry, to reach your proper diagnosis is not possible. Clear हो गया बेटा? तो अगर आपने irrelevant systemic inquiry की तो फिर रिजल्ट क्या होगा? You will be exhausted and finally die. Always do the relevant systemic inquiry. This is checklist for systemic review. ये चेकलिस्ट जो हम पढ़ाते हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट को, ताकि उन्हें उस पार्टिकुलर सिस्टम का जो सिम्टम है वो याद हो जाए. लेकिन आप सारे सिम्टम जो होती है मरीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? तो ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ देखो कार्डियोवास्कुलर के 11 सवालात हैं, रेस्पिरेटरी के 12 क्वेश्चन, जीआईटी के नियरली 50, हेमेटोलॉजी 5, मस्कुलोस्केलेटल 8, एंडोक्राइन 8, neurology 9. Is it possible to ask in one city? तो सिस्टमिक इंक्वायरी तो यही है. तो इसलिए कहते हैं बीइंग अ फिजिशियन you have to focus on your presenting complaint and ask the relevant systemic inquiry. अगर आप इतना सब कुछ पूछते हैं, हाँ, इतना सब कुछ पूछने के बाद क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपका हाल इस बंदा जैसा हो जाए? पॉसिबल है. इट इज एग्जॉस्टिंग बोथ डॉक्टर एंड पेशेंट. सही है. अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम. दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस की. सही है. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस की जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम. Such as fever, weight loss, night sweat, fatigue and lethargy, a patient did not mention them earlier. अगर पहले मरीज ने नहीं बताए थे और आपने नहीं पूछे थे, फिर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम यू हैव टू आस्क देम. Then fifth component is the current medical history. Current medical history consists of two parts: history of investigation and history of treatment or presenting illness. You have to ask for investigation first. What is your complaint? I am suffering from fever. इस बुखार के लिए आपने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की है? वो इन्वेस्टिगेशन आपको याद है? हो सके अगर एजुकेटेड है वो आपको बता देगा.
सही। फिर डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दी है, अगर उन्हें याद नहीं है, आप उन्हें कहते हैं कि आपका खून का टेस्ट हुआ है, हाँ, आपके एक्सरे अल्ट्रासाउंड हुए हैं, पेशाब का टेस्ट हुआ है, फिर डॉक्टर ने क्या बताया है ट्रीटमेंट, आप करंट इसी बीमारी के लिए डॉक्टर ने क्या दे दिया था, ड्रग्स, नेम ऑफ ए ड्रग, डोजेज ऑफ ए ड्रग, कोई एडवर्स इफेक्ट उससे नहीं हुए थे। मुझे सांस की तकलीफ ही थी 3 महीनों से, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा यहाँ तस्वीर ले लिया, ऊटू ले लिया जो मरीज़ कहते हैं, एक्सरा ले लिया सीने का, तो फिर मुझे गोलियाँ दे दी। कौन सी गोलियाँ? 6 गोलियाँ सुबह मैं नाश्ते से पहले लेता था ऑन डेली बेसिस, और अभी 2 दिन हुए मुझे यरकान हो गया, पीलापन हुआ है। फिर आपको आइडिया लगेगा कि नेम ऑफ ए ड्रग, डोजेज एंड एनी एडवर्स इफेक्ट, एनी इम्प्रूवमेंट, आपको ये ट्रीटमेंट दी है, इस ट्रीटमेंट से आप इम्प्रूव हुए थे नहीं हुए थे, यू हैव टू मेंशन अंडर द करंट मेडिकल हिस्ट्री। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि करंट मेडिकल हिस्ट्री में गेव यू अ डायग्नोस्टिक क्लू एट बेड साइड, ये कभी मिस नहीं कर लेना। अगर एग्ज़ाम में आप मरीज़ से पूछते हैं कि आपका डायग्नोसिस क्या है, तो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो तो बुरा मानेगा, लेकिन अगर इस तरीके से आप पूछते हैं तो आपका डायग्नोसिस मिल गया। जो पहले अभी मैंने सिनेरियो बता दिया था, आपको डायग्नोसिस मिल गया होगा कि डायग्नोसिस क्या था, ट्यूबरकुलोसिस। जॉइंटिस क्यों हुआ था? सेकेंडरी टू द ड्रग्स एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ से ये नेवर मिस द करंट मेडिकल हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। और दूसरी बात यही है कि एंड हेल्प यू इन द सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। जो सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट ये दे चुका है, इससे फायदा नहीं हुआ था, दोबारा मुझे ये तो नहीं देना होगा, इट कैन हेल्प यू। We were discussing about the current medical history. It can give you a diagnostic clue at bedside. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि करंट मेडिकल हिस्ट्री में आपने यहाँ हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूछा एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट फॉर करंट इलनेस पूछा, लेकिन हमारे मरीज़ ऐसे होते हैं ओवर द काउंटर ड्रग भी लेते हैं, वो भी ज़रूर पूछना चाहिए। आप पूछते हैं कि डॉक्टर ने आपको क्या दिया है, आपको ये भी पूछना होगा कि आपने खुद क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्योंकि उन्हें बुखार होता है, वो हो सके पेनाडॉल लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लेते हैं, कोई हर्बल प्रोडक्ट लेते हैं, हकीमी दवाएं, तो वो आपको भी मेंशन करना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द फंक्शनल स्टेटस। फंक्शनल स्टेटस आप यहाँ भी पूछ सकते हैं और हिस्ट्री ऑफ पर्सनल हिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू आस्क functional status and it must be a part of history of presenting illness. Functional status, it shows the current level of disease activity. अगर आपने functional status मरीज़ का पूछ लिया, आपको disease activity का पता चलेगा कि कितना सीवियर डिजीज़ है, whether he is independent with his activity of daily living or dependent with activity of self-care by asking screening questions such as washing, dressing, eating, using the toilet, getting up, cooking, cleaning, shopping. और हिस्ट्री में सिर्फ एक ही पॉइंट मेंशन करना है, he or she is dependent or independent for or his daily activity.
इतना ही बताना है एक सेंटेंस के लिए। फंक्शनल स्टेटस से आप लेवल ऑफ डिजीज एक्टिविटी जज कर सकते हैं। नाउ कम टू द पास्ट हिस्ट्री। आफ्टर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस you have to mention the past history. Past history include all significant events prior to the presenting complaint. You have to mention. It must be written in the chronological order. The disease may or may not have any relation with the present disease. What do you mean past? ये स्लाइड नजर आ रहा है? This is newborn baby. Past start from born, prior to the presenting events. पैदाइश से लेकर प्रेजेंटिंग इवेंट से पहले जो भी ड्यूरेशन आती है, that is the past. Is it clear? Yes. तो फिर past history should be recorded under the following heading. Past history of similar illness is the first component. Similar illness. Maybe there is chance of running recurrent illness. You have to ask past history of similar illness. Shortness of breath है, इससे पहले भी क्या शार्पनेस ऑफ ब्रेथ होता था? तो आपको पता चलेगा कि मे बी ब्रोंकियल अस्थमा है, COPD है, जो बार बार इन्हें हो रहा है। इज इट क्लियर? देन यू हैव टू आस्क पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। क्या बोर्न से, पैदाइश से लेकर अब तक किसी को जुकाम नहीं हुआ है, किसी को डायरिया नहीं हुआ है? हाँ? होता है। तो यहाँ से मैं एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ कि पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट. You have to ask about the past significant medical and surgical history. There is no past significant medical and surgical history. तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता. अगर हुआ है कोई पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री है, देन यू हैव टू एलाबोरेट इट. बहुत से मरीज आते हैं, पहले आपको तो शुगर का मसला तो नहीं था, डायबिटीज़ मेलाइटिस का. हाँ मुझे शुगर था 2 साल पहले, 2 साल पहले शुगर था. तो फिर आपने क्या किया? शुगर की दवाइयाँ ली? नहीं, मैंने शुगर की दवाइयाँ नहीं खाई हैं, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू को शुगर है, मुझे भी शुगर है. तो कोई टेस्ट वगैरह करवा दिया था? नहीं, टेस्ट भी नहीं करवा दिया था. कोई दवाइयाँ ली हैं? कोई दवाइयाँ भी नहीं ली हैं, टेस्ट भी नहीं करवा दिया है. कोई शुगर की सिम्टम है, पोलीयूरिया, पोलीडेप्सिया, वेट गेन, वेट लॉस? नहीं, ऐसी तकलीफ भी नहीं है. तो फिर क्या होगा? तो कहने का मतलब यही है कि यू हैव टू एलाबोरेट इट, कन्फर्म करना चाहिए. बस मुझे मुल्ला ने कहा था, मुल्ला के पास गया था, उन्होंने दम कर लिया तो मेरा शुगर ठीक हो गया. सही? तो इसका मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हेन एंड हाउ. उसी वक्त आपको शुगर की तकलीफ थी, आप कहते हैं कि मुझे शुगर है, उसी वक्त आपकी तकलीफ क्या थी? व्हाट वाज योर प्रॉब्लम? नंबर 1. व्हेन, कब था? 2 साल पहले. हाउ का मतलब ये कि आपने फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, शुगर के लिए, ज़ियाबिटीज़ के लिए आपने फिर क्या किया? कोई टेस्ट किया, कोई इन्वेस्टिगेशन किया, किसी डॉक्टर के पास गए, कोई दवाइयाँ ली, तो फिर ये कन्फर्म हो जाती है. तो
इसके बाद और पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, कुछ क्रोनिक डिजीजेज होते हैं, हो सके मरीज भूल गया हो, आप उन्हें मरीज को कहते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस, COPD, ट्यूबरकुलोसिस, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं थी आपको इससे पहले, कहता है। Past blood transfusion you have to ask, and any adverse effect related to the transfusion you have to mention in the history. Past vaccination history against hepatitis B, against the enteric fever, against the tuberculosis, you have to ask if it is relevant. Past traveling history. Infectious diseases are more common among travelers. You have to ask. Such as malaria, enteric fever, dengue, hepatitis B, C are more common among travelers. You have to take past traveling history. This is very important, past drug history. Never miss this component under the past history, past drug history. ये सब कुछ पूछने के बाद आप उन्हें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देने तो जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मरीज ने इससे पहले कौन सी ड्रग ली है, आपको पता होना चाहिए कि मरीज किस ड्रग से एलर्जी है। हो सके मरीज को पेनिसिलिन से एलर्जी है और पेशेंट आया है सिंपल सोर थ्रोट के साथ, आपने दोबारा पास्ट ड्रग हिस्ट्री नहीं ले लिया, आपने दोबारा पेनिसिलिन लिख के दे दिया, तो फिर क्या होगा? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगा, बजाय एक सिंपल सोर थ्रोट की मरीज चला जाएगा। You have to take the history, past drug history. After past history, we are going to discuss family history. This is also important. Family history. Certain diseases are common in certain family because of genetic and common environmental exposure. Never miss the family history. Who is this pretty girl? This is Angelina Jolie. Angelina Jolie, an American filmmaker, actress. She has gone under prophylactic double mastectomy. Why? When she came to know she is positive for BRCA1 gene, which increases the risk of developing breast and ovarian cancer. Angelina Jolie lost her mom at the age of 56 due to ovarian cancer. We are discussing the family history. Her mother died due to ovarian cancer. The family history should be recorded, including the following detail. Number 1, patient should be asked about their parents, sibling, grandparent, grandchildren, health, age, and cause of death. Is it clear? Ask the patient about relevant similar illness in the family. Diabetes mellitus, hypertension, whatever is the relevant, you have to ask. Third component, ask about any history of chronic illness running in the family. There is difference. One is the relevant similar illness.
Other is the chronic illness in the family. The fourth component, the patient should be asked for the first cousin marriage history. If you are suspecting thalassemia, sickle cell disease, after that we are going to discuss the socio-economic personal history. थोड़ा सा फास्ट जाते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है. Under this heading, the following details should be asked. You have to ask about the home surroundings and history of keeping pets at the home. You have to ask the marital status and job, occupation and educational status of the patient, and especially never miss the daily or monthly income of the patient. क्योंकि आपको दवाइयाँ लिखने होते हैं मरीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन लिखने होते हैं. अगर आपको उसका डेली इनकम या ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है तो आपकी इस प्रिस्क्रिप्शन का इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपने लिखा है ट्रीटमेंट के लिए तो कुछ फ़ायदा ही नहीं. हो सके मरीज अफोर्डेबल ना हो. सही. Habits or addiction, you have to ask about the habits, bowel habits, sleep, appetite. Addiction, ask about the cigarette smoking, alcohol, and ask about any stress, worries and depression if it is relevant, and dietary history if it is relevant, especially in case of diabetes mellitus, in case of malnutrition, malabsorption. If it is relevant, you have to ask about dietary history. Social and family relationship, दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, फैमिली के साथ कैसे हैं, you have to ask. Usual pastime and source of entertainment, फारिग वक्त में क्या करते हैं, that is the very interesting personal history. And you have to ask finally about the sexual history. Sexual history, if you are suspecting infectious diseases, hepatitis B, C or HIV, or the patient presented with the dysuria and lower abdominal pain, you have to ask about the sexual history. Type of sexual practice, mood of sexual practice, and any precaution. You have to ask all about the sexual history. Then, in case of female, menstrual history. You have to note menstrual history. Age of menarche, first note age of menarche, then frequency and duration of periods, and then amount of bleeding, pain associated with menstruation, dysmenorrhea or not. This menstrual history should be asked to all female, and especially if the female present with the lower abdominal pain, if the female present with any discharge, last day of menstruation, number of pregnancy and mood of delivery, number of abortion, complication of pregnancy. You have to note all these under menstrual history. At the end,
You have to address the area, concern and expectation of the patient. Suppose patient presented with the sore throat, but he or she is concerning about the retroexternal pain. Is it clear? Presented sore throat है, लेकिन उन्हें रेट्रोएक्सटर्नल पेन भी हो रहा है. वो कहता है कि जब तक आपने उनका कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, एरिया नहीं पूछा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा. He or she is not thinking about the nose. He or she is thinking about art. Is it clear? Yes. Then thank you so much.